Okay, so it's done now. ठीक है. So installation is done. Okay, so what we can do is you will get this option once the complete is done, the installation is done. You will get this option like reboot system. Okay, Rocky Linux is now successfully installed and ready for you to use. Go ahead and reboot your system to start using it. Okay, done. I'm clicking on reboot and it will shut down and come back. Sometimes it will take that ISO file again, okay, to boot it from the ISO. So if you get that screen, the installation screen again, then what you can do, you can go to some, the device setting and disconnect that ISO file, or right click that setting thing, select the machine and click on settings, right? This option, select the machine and setting and remove that ISO file. Okay, and now, yeah. So if you look at this, see the what is the host name here? Master, right? Guys, speak. Yes. So I'm using root user account. I have given the password for the root account, right, while installing the OS. So use the root account and logged in using the password. And if I run this hostname command, I could see my hostname of the server is master.ossway.com, right? So logging into this particular machine and running all the commands, it will be quite messy for us to understand, to see, right? Visually it is not so so much comfortable to look into all the commands. So for that purpose we need that putty option. So just to log in, what is the IP address of this server is 10.02.15. This is the IP address of this particular machine. So I will log in from my Mac terminal. And how to log in? SSH is the command. Secure shell is the command that can be used to log into the remote Linux machine. Okay, समझ में आया? SSH is the command that will be used to log into the remote Linux machine. Linux machine, again I am saying. Okay, and here by default you can put by default this particular hash prompt denotes you are already logged in using the root user on this machine. So that is why it will take it as a root by default to log in on the machine. 10, what is the IP address of this machine? 10.02.15. Okay, 10.0, oh, sorry, 0.2.15. If I do it, let me see, maybe I need to change the network settings for this one. Ping 10, sorry. आपको पता है पिंग का यूज क्या है? पिंग कमांड का एनीबॉडी? Yeah, to check if the server is up or not, or the host. Who is that? Akash. Yeah. Okay, so what is the full form of this ping command? I don't know. ओके, सो ऐसा काम करना है अपने को. ओके, जो भी मैं बताऊंगा बैकएंड में Mhm. आपको हर चीज़ का ऐसा डीप डाइव करना है हर कमांड पे. पिंग मीन्स पैकेट इंटरनेट ग्रॉपर. ओके, Mhm. इसका फुल फॉर्म है. Obviously that will be used to check whether that device is live or in powered up mode. Okay, so what we need to do is we need to change the settings for this machine. Network settings, network, it's in NAT mode, so we'll do bridged adapter. It will get the my local router IP address now, so that way I'll be able to connect. Network manager is not there. IP address, let me reboot.
password and address. What is the address now? 192.168.0.109. क्या किया मैंने? बेसिकली समझ में आया क्या किसी को? एग्जैक्टली क्या हुआ? पहले मेरा वर्चुअल मशीन का नेटवर्क सेटिंग नैट मोड में था. नैटिंग मतलब इट विल कन्वर्ट योर आईपैड, हाउ टू पुट इट, नैटिंग मतलब इट वोंट टेक द आईपी एड्रेस फ्रॉम योर राउटर्स DHCP लीज लिस्ट. ओके, जो भी मेरा इंटरनेट है मेरे घर पे, दैट पर्टिकुलर राउटर इज हैविंग सम DHCP लीज. मतलब 192.168.0.1 से 192.168.0.100 तक आईपी एड्रेस मिल सकते हैं. दैट मीन्स 100 मशीन्स और 100 मोबाइल डिवाइसेस, anything can connect to my router. Okay, so this is my 192.168.0.109 is my range for the router. But previously what I was getting is 10.0.215. तो वो नैटिंग हो रहा था, and that is why we were not able to connect or not able to get into 10.0. network. तो अभी what we will do, what we have done is we have changed that to bridged adapter. तो ये नेटवर्किंग का कंसेप्ट है. we'll see it later. नेटवर्किंग कब आएगा तब अपन देखते हैं क्या क्या ऑप्शंस हैं. So for now what I will do, I will log in using this IP address now, and if I do ping now 192.168.0.109 tha, right? So I'm able to ping to the machine right now. Okay, previously it was getting request timeout error. Now I'm getting the ping response from the machine. So now I can log in using the root account @192.168.0.109. सो किसी भी लिनक्स मशीन में लॉगिन करने के लिए दिस इज़ द स्टैंडर्ड सिंटैक्स यू नीड टू फॉलो. पहला SSH इज़ द कमांड टू लॉग इन इनटू द लिनक्स मशीन. गाइस, am I audible? Yes. Okay. Yes. Okay, I was speaking on the mute, man. So see, right now we are getting the ping from this machine, right? Ping reply. So we are able to connect to the machine right now. It is 192.168.0.109 range, because my local router is having this lease, IP address lease. So that is why now my this particular virtual machine got connected to the internet. If I do ping google.com from here, it will go out now. See, I'm getting the response. Okay, so this is how, sorry. So now I want to log into the machine using, what is the syntax for logging into the machine from the outside to any Linux machine is SSH is the command, first command. Then you need to put the username there, using which username you are trying to log in on the machine, because in Windows you only get the prompt and their username you need to put and password need to put and enter, right? But this is kind of different way of logging in. So try to remember this syntax. SSH is the command, and then first is username, then @ on which machine. You can put the host name here, but we don't have the DNS configured for that host name, so the host name won't work. We need to give the IP address here. So IP address of my machine is 192.168.0.109. समझ में आया ये सिंटैक्स? समझा सबको? गिव मी थम्स अप क्विकली. Yes. ओके, एक बार रिपीट करो ना सर. हाँ, तो किसी भी लिनक्स मशीन पे लॉगिन करने के लिए यू नीड टू फॉलो दिस सिंटैक्स. सिंटैक्स मतलब कमांड से लॉगिन करना है अपने को हर मशीन पे, राइट? तो कमांड कैसा, मतलब क्या फॉर्मेट में रहेगा, व्हाट विल बी द ऑप्शंस. सो फर्स्ट इज SSH सिक्योर शेल, इसका फुल फॉर्म है. सो दिस इज द कमांड विच कैन बी यूज्ड टू लॉग इन टू एनी लिनक्स मशीन्स. याद रख लो हमेशा के लिए, लिनक्स में लॉगिन करना है देन यू नीड टू हैव दिस SSH कमांड. पहले SSH करके, SSH किया या नहीं यही पूछा जाएगा मार्केट में. whether you are able to SSH to the machine or not, that means what, you are able to log into the machine or not. Okay. और यहाँ पे मैंने रूट ऐसा यूज़र नेम दिया है, तो यूज़र नेम कोई भी हो सकता है. यहाँ पे अगर मेरा नाम रहेगा तो G पाटिल ऐसा नाम रखूँगा मैं. यहाँ पे मेरा यूज़र नेम G पाटिल है तो मैं आई विल राइट इट एज G पाटिल फर्स्ट, देन @ देन IP एड्रेस. ओके. अगर आपको आकाश के यूज़र नेम से लॉगिन करना है, SSH स्पेस आकाश @ विच मशीन, दिस मशीन. यहाँ पे अगर किसी और मशीन पे करना है तो यू कैन पुट इट एज दैट मशीन नेम और द डिफरेंट IP एड्रेस. बट द सिंटैक्स इज SSH यूज़र नेम @ मशीन नेम. ठीक है, समझ में आए सागर? Yes, Yeah. sir. Okay. Thank you. So if I do enter now, it will ask me this thing. This is key thing. So we'll see it in the passwordless SSH and all those things. So for now, just say accept the things. Yes.
and are you sure you want to continue connecting? Yes. And now warning, permanently added this EDSA to the list of known hosts. This key will get added to the known host file. Where does that known host file will reside? We'll see. Okay. For now you need to enter the password. Enter the password. What it is saying? Permission denied. Please try again. I am entering the right password. Though I am getting the permission denied, please try again. Why? Because by default whenever you deploy the new machine, that root access is blocked by the machine itself, OS. तो रूट से लॉगिन नहीं कर पाएंगे अपन बाय डिफॉल्ट, अपने को वो कस्टमाइजेशन करना पड़ेगा ऑन द मशीन इटसेल्फ, देन ओनली वी विल बी एबल टू लॉगिन. तो हमने दूसरा यूज़र क्रिएट किया था, कौन सा वाला याद है आपको? विच यूज़र? इंस्टॉलेशन के टाइम पे हमने और एक यूज़र दिया था, कौन सा वाला दिया था? OSWay master. OSSWay, only OSSWay was the username. Okay, enter. तो अभी मैं लॉगिन कर रहा हूँ, तो आई एम इनसाइड द मशीन नाउ, राइट? लुक व्हाट इज द होल टेक्स्ट हियर. ये पूरा पढ़ो, यहाँ पे क्या दिख रहा है? OSSWay. एंड OSSWay क्या है? हमारा यूज़र है. समझ में आया? Yes, yes. तो OSSWay यूज़र के साथ हमने लॉगिन किया ऑन विच मशीन? master.ossway.com. ओके, तो अपन एक काम करते हैं, इट इज़ गेटिंग कंफ्यूजिंग. तो यस यू माइनस ओके, यूज़र ऐड टॉम. ओके, ठीक है, अभी मैं आया बाहर. ओके, सो नाउ मुझे लॉगिन करना है ऑन दैट मशीन यूजिंग द टॉम यूज़र. गिव मी द सिंटैक्स, टेल मी. कौन बताएगा? सागर, आकाश, पवन, Yeah. कौन बताएगा? SSH ओके Tom ओके at ओके, IP address. एंटर. ठीक है. So now I am logged in using the Tom user on which machine? Master node. ठीक है. So this is how you can read it. अभी और एक डिफरेंस है, अभी अपन लॉगिन करने के बाद आपको डॉलर मिल रहा है यहाँ पे साइन, राइट? एंड व्हेन आई एम डूइंग इट दिस वन, आई एम गेटिंग विच साइन हियर? Yeah, pound sign, the hashtag sign. राइट. सो इसका मतलब क्या है? when you are getting into this pound sign, that means you are having the root privileges. You could see it over here. root Yeah. से login हो चुका already है. that means you can restart the machine, you can shut down the machine, you can delete anything on the machine. लेकिन जब तक डॉलर रहेगा. Which password you used? नहीं, वो रूट का पासवर्ड यूज किया ना मैंने. Okay. हाँ, तो अभी क्वेश्चन ये रहना चाहिए आपका, हमने तो बाहर से लॉगिन करके देखा लेकिन वहाँ पे अलाउ नहीं किया, फिर यहाँ पे रूट को कैसा जा रहा हूँ मैं? बराबर है? हाँ. क्योंकि एक्सटर्नल डिवाइसेस से अलाउ नहीं करेगा, ये विद इन OS है. मैं ऑलरेडी OS में आ चुका हूँ यहाँ पे, राइट? तो यहाँ से मैं रूट को स्विच कर रहा हूँ. एस यू मीन स्विच यूज़र. स्विच यूज़र मीन सुपर यूज़र. डायरेक्टली स्विच यूज़र अगर एंटर करोगे, इट विल टेक यू टू द रूट यूज़र ओनली. Okay. ठीक है. सो दिस पॉन्ड साइन मीन्स यू आर रूट by default. You could see it over here as well, root user @ on this particular node. That means you can do anything on this machine now. Okay, so be careful while running any commands on the machine. If you are on $sign, then that is fine. अगर ये वाला prompt है आपके पास, तो कोई भी कमांड रन करने से पहले 2-3 बार चेक कर लो. इवन इट इज़ ls कमांड एज वेल. अगर ls से सिर्फ फाइल लिस्ट होता है, ls करने से पहले भी आप डबल टिबल चेक कर लो, तो कोई इशू नहीं आएगा बाद में जब भी कुछ होगा. ओके, सो दिस इज हाउ यू एक्सेस द लिनक्स मशीन वंस यू डिप्लॉयड. समझ में आया? Yes. ठीक है. अभी मतलब वर्चुअल मशीन क्रिएट करने का हो गया, राइट? एंड लॉगिंग इन और एक्सेसिंग द वर्चुअल मशीन इज आल्सो डन. अभी आज जो हमने देखा है पूरे सेशन में, सब ठीक है? ओके है? ऑल गुड? यस. Yes. बस लॉगिन का जो पार्ट है वो थोड़ा सा और प्रैक्टिस करके आए, समझ में आएगा.
Yes, yes, yes. Practice अपन अभी next tomorrow also we are going to see that same thing because every day we need to log in. तो वो Yeah. आपको लॉग इन ऐसे ही हो जाएगा, उसका इशू नहीं है, राइट? Hmm. एवरी डे यू नीड टू लॉग इन, यू नीड टू रन द कमांड्स, राइट? तो वो करना ही है आपको, तो वो इजीली हो जाएगा. పవన్ Yes, sir. Yes. అర్థమైందా? मैं इंस्टॉल करूंगा. अर्थमैन सर. Okay. So I am going to upload this video on the YouTube channel, okay? The OSSWay YouTube channel. अगर कुछ इशू भी है आपको तो वहाँ पे देख लो और you know you can take the reference from there and you can do the further task. ठीक है? Okay. Okay guys, अगर कुछ डाउट्स है तो let me know or else we'll close the call today. Just लिंक शेयर कर देना सर एक बार ग्रुप हाँ, में. लिंक ओ, शेयर करता YouTube हूँ. सा. यस यस, यूट्यूब का ना? Yes. ठीक है करता हूँ. ओके, सागर, आकाश and पवन, all good right for today? Good, sir. Yes. Okay then. See you tomorrow then. Okay? Okay, sir. Bye. Yeah, bye bye. Bye.